in 1875 by an American engineer, and since then there are various codes which are in use. There are various methods of design. The first method of design that was established by engineers was working stress design method, and it was developed in 1894. It was launched officially in this year, and it was in use till 1950. After 1950, the working stress design method was replaced by load and resistance factor design method. So we will discuss both of these methods. Now, LRFD method or load and resistance ultimate stress design method is still in use, and we are using it for designing of RCC structures. Now, as far as the codes are concerned, there are two basic categories of codes which are required to design a building. One is called general building codes, and another is called seismic codes. Now, seismic codes, we are having enough discussion at the basic level for use of seismic codes in various structures. And if you remember, we were discussing the Pakistan seismic codes, PCP SP07, right? Now, as far as general building codes are concerned, there is no specific code developed in Pakistan to design RCC structures by using general building codes. General building codes actually cover altogether all the parameters, all the requirements of RCC building design, and these are additional codes in addition to seismic codes. Okay? So this general building codes basically in nowadays there are three codes which are in use, known as UBC, IBC, and Eurocode. Right? There is another type of code which is used under the heading of material specific codes. So material specific codes are basically specific type of codes which only deal with the engineering materials, the properties of materials. Like for example, in RCC structures, we are using steel, we are using concrete. So you have to check the concrete and steel on the basis of some guidelines, right? The strength of concrete, the yielding and ultimate strength of reinforcement or steel bars or something like this. So for that reason, the material specific codes which are in practice in nowadays in all around the world are ACI for RCC structures, AISC for steel structures, and ASTRO for basically infrastructures. So there are three types of material specific codes which only we deal with the engineering material required properties of design. So it means that we have got three codes to be used together whenever we design RCC structure, that is general building codes, seismic codes, and material specific codes. So if somebody asks you what are seismic codes, you should be able to define that thing. If somebody asks you what is the difference between general building codes and seismic codes, as it is clear from its name, the general building codes deal in general all the requirements of design, right? And material specific codes only deal with the material properties of engineering design, right? So now let me elaborate these three codes one by one to be used in our structural designing. Okay, going further, the general building codes which are in use in our part of the country, of the area, it is basically UBC, right? UBC was now modified and now it is replaced by another course known as IBC, but UBC is still effective for Pakistan. These codes are seen on the screen, developed by the American engineers, right? And the American designing was done initially such that the America, which is actually a huge country, it's not a country, it's a union of so many states are known as like small countries, right? So it was actually divided in three zones. The northern, the National Building Code was basically in use in America, right? Then we were having the Standard Building Code, and then we were having the Uniform Building Code. So all these three codes were developed by America, and it was in use until 1997. The UBC was replaced, and in 1999 there was another code announced by Americans under the heading of IBC, International Building Codes. ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं ये जनरल बिल्डिंग कोड्स के बारे में, राइट? वी आर नॉट टुडे डिस्कसिंग द सीस्मिक कोड्स ऑफ डिजाइन ऑल दिस स्टफ, वी आर डिस्कसिंग जनरल बिल्डिंग कोड्स. सो उसमें ये तीन नाम है जो स्टार्ट हुआ था, NBC, SBC, UBC. ऑल दिस थ्री वर डेवलप्ड बाय अमेरिकन्स. देयर वाज
एडिशन इनटू दिस एंड देयर वाज मॉडिफिकेशन, एंड फिर तीनों कोड्स को एक सिंगल नाम से याद किया जाता है, और ये ईयर 2000 में लॉन्च हुए थे. इट वाज एक्चुअली IBC और इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स, राइट. एंड दीज आर एक्चुअली रिवाइज्ड, अपडेटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. एंड in IBC 2012 the latest version of the IBC codes, up to 2018 में और वर्जन भी आ गया है. There has been modifications in the general building design guidelines, right. Now the most effective codes which are in use till 1999 was UBC 97, right. और इसमें दोनों चीज़ों को कैटर किया गया था. It deals with the seismic design, it deals with the general building design as well. बट एयर 1999 के बाद इसमें वो अपडेशन नहीं आई, एंड वी वर एक्चुअली दिस वर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय IBC, राइट. नाउ seismic codes basically vary from country to country, and most of the countries have their own seismic codes. तो जनरल बिल्डिंग कोड्स जो है आप किसी भी मॉडिफाइड टाइप के जनरल बिल्डिंग कोड्स को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका ताल्लुक आपके सीजमिक जोनिंग के साथ नहीं होता, और ना ही आपकी करंट लोकेशन के साथ होता, बिकॉज इट डील्स विद द जनरल डिज़ाइन गाइडलाइंस, राइट. स्टैटिक लोड्स, लाइव लोड, डेड लोड्स, एक्स्ट्रा सुपर इम्पोज डेड लोड, समथिंग लाइक दिस, राइट. और लोड कम्बिनेशंस, रिडक्शन फैक्टर्स इन डिज़ाइन. तो ये बेसिकली जनरल गाइडलाइंस हैं डिज़ाइन की, जो कि जनरल बिल्डिंग कोड के नाम से याद की जाती हैं. तो ये हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. बट एज फार एज दी सीस्मिक कोड्स आर कंसर्न, you have to be very much specific with the seismic zoning. For Pakistan, you cannot use the seismic zones of America, right? In America, the seismic guidelines or the seismic codes which are in use currently are NHRP, National Earthquake Hazards Reduction Program. So they actually use the seismic design guidelines under this heading, right? पाकिस्तान में BCP-SP07 है. इस तरह अमेरिकन के अलावा चाइनीज़ बिल्डिंग कोड्स और हैं, इंडिया के सीजमिक कोड्स और हैं, इस तरह और एशियन कंट्रीज जापान के सीजमिक कोड्स और हैं. एंड दीज वेरी बिकॉज ऑफ द सीजमिक लोकेशंस, द फॉल्ट लाइन्स. एज फार एज मटीरियल स्पेसिफिक कोड्स आर कंसर्न, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मटीरियल स्पेसिफिक कोड्स आर ACI, अमेरिकन कंट्रीड इंस्टीट्यूट फॉर RCC स्ट्रक्चर्स, राइट. और इसके बहुत से वर्जन हैं. ACI कोड्स का आपने नाम सुना होगा, RCDII में आपने इसको थोड़ा यूज़ भी किया होगा. जो अमेरिकन कंट्रीड इंस्टीट्यूट के कोड्स हैं ACI जिसको हम कहते हैं, दीज कोड्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 मेन टाइप्स. वी हैव गॉट ACI 318, ACI 315 एंड ACI 349 सॉरी. नाउ बेसिकली जो आपका ACI 318 है, इट डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ जनरल गाइडलाइंस. द मोस्ट prominent type or part of the ACI codes is ACI 318, known as Building Code Requirements for Structural Concrete. ये ACI 315 जो है ये आपका हेल्पिंग मैनुअल है, इसको हम कहते हैं डिटेलिंग मैनुअल ऑफ द ACI. तो वो चीज़ें जो ACI 318 से कवर नहीं होती या इसके बारे में आप फर्दर डिटेलिंग की तरफ जाना चाहें, देन यू हैव टू यूज़ ACI वॉल्यूम 318 और वर्जन 315 सॉरी, वी हैव टू यूज़ वर्जन 315 ऑफ द ACI डिज़ाइन कोड्स. Now ACI 349 are the design codes which are only specific, and it deals with the nuclear safety reinforced concrete structures. So only the specific structures required to be constructed under the guidelines of ACI 349, right? In Pakistan, what we have done is that we have actually modified the seismic codes of Pakistan in such a way that it has got some chapters to deal with the general building codes as well. तो हमने basically UBC 97 से guidelines उठाई हैं, because the UBC 97 is more reliable as far as Pakistan designing in Pakistan or in our country is concerned. ये ज़्यादा safe है ACI के मुकाबले में. इसमें safety factor ज़्यादा है, loads और reduction coefficients के हिसाब से, right? लिहाजा इससे ही पाकिस्तान के जो बिल्डिंग कोड्स हैं BCP-SP07, उसमें जो चैप्टर्स स्टैटिक लोडिंग के लिए और जनरल डिज़ाइन के लिए डाले गए हैं, उसकी गाइडलाइन UBC 97 से ली गई है. IBC 2000 जो है वो हमें सूट नहीं करता. although they are modified, but they are so much fixed and accurate in they are so much thin, I would say. There is a thin chance or error or I would say margin of error. So because of this thin margin of error, we cannot prefer the IBC codes in Pakistan to be used as a general building codes. For example, in Pakistan there is no such agency to control the building design everywhere, right?
सो अगर किसी रिमोट एरिया में आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नो वन इज़ गोइंग टू चेक इट कि ये स्ट्रक्चर जो है ये किस लोड के लिए बनी है, राइट. For example, if you even in Peshawar, if you see most of the time, there are some structures constructed like market कोई बनी है, वो market जो बाद में यूज़ हो रही है किसी और काम के लिए, कभी उससे होटल बन जाता है, कभी उससे गैदरिंग हॉल बन जाता है, कभी उससे लोग जो है तो हॉस्पिटल बना लेते हैं. सो देयर आर मिक्स यूज़. तो इससे आपकी लाइव लोड जो है उसकी बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन आती है, राइट. सो द स्टैटिक लोडिंग वेरीज विद द टाइप ऑफ यूज़. But that thing is not controlled in Pakistan. If you use the IPC 2000 or IPC 2012 in Pakistan, you need to very much specific throughout the lifetime of the structure कि अगर ये as a market design हुई है तो हमेशा इधर शॉप्स ही रहेंगी, कोई और चीज़ गोदाम आप इधर नहीं बना सकते, इधर आप डंपिंग नहीं कर सकते, राइट. लेकिन वो चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री. सो फॉर दैट रीज़न द ओल्डर वर्जन ऑफ द जनरल बिल्डिंग कोड्स, दैट इज़ UBC 97, we are preferring this older version of UBC 97 heading जो इसमें आती है, बिकॉज इसमें सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा है. और ठीक है इकॉनमी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी लेकिन सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को ये सूट करता है. इसीलिए BCPSP 07 में जो स्टैटिक लोडिंग के लिए जनरल बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए चैप्टर्स जो हैं, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस UBC 97 and not IBC 2000, right. Now going further, what about the material specific codes? Material specific codes में we are bound to use the ACI. Yes, we are using ACI to check the design strength of concrete, to check the design criteria of structural steel, right. Engineering material basics ACI RCC designing के. And basically these codes deal with the structural concrete. तो structural concrete के heading के अंदर जितनी भी properties आती हैं, we are supposed to take the guidelines for these properties based on ACI 318. For example, the concrete crushing strength, seismic coefficient of expansion and contraction, the Poisson's ratio, इसी तरह से steel में modulus of elasticity, its Poisson's ratio, thermal coefficient of expansion, all these things. These properties are taken from what? From where? From ACI 318. Known as ACI codes are ACI General Design Building Codes, right? For pre-stressed concrete, there are some chapters available in these codes as well, जो कि pre-stressed concrete को भी deal करते हैं. Now, as far as the detailed use of ACI is concerned, we should not be using the ACI 318 version in detail, because UBC 97 में बहुत से general building codes मौजूद हैं. So for that reason, some part of ACI is used and some part is not acceptable because of the compatibility issue. Now what is that compatibility issue? For example, if you see here, let me just, ये नेक्स्ट आगे स्लाइड्स आएंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपेटिबिलिटी इशू होता क्या है और क्यों जो है ACI को हर जगह पे हम अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली पाकिस्तान में डिज़ाइनिंग में, because there are some problems. For that reason, if you use the ACI codes all the time, there is some part of the ACI is not relevant with BCPSP 07, तो उसमें हमें बड़ी तरीके से यूज़ करना पड़ता है. Again, we would go to UBC 97 और इसकी हम गाइडलाइंस को अप्लाई करेंगे and we would prefer this one, right. लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में हम ACI को फॉलो कर रहे होते हैं. ओके अच्छा, इससे पहले कि हम आगे डिटेल डिस्कशन की तरफ जाएं, जब हम ये सारे डिज़ाइन कोड्स को यूज़ करते हैं तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? द यूज़ ऑफ दिस डिज़ाइन कोड्स इज़ डिपेंडेंट बेसिकली ऑन द डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर. अब किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है, इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स इन 4 मेजर पार्ट्स, right, जिसको हम कहते हैं objectives of design or the scheme of design as well. Whenever you use the codes, the use of codes should be such that you should design the most functional structure, that the structure should be able to fulfill all the functions. Keeping in view, let's say अगर आपका seismic code जो जनरल डिज़ाइन बिल्डिंग कोड्स कहता है कि आपका कॉलम का साइज 24 by 24 इंच हो और वो 10-10 फुट अपार्ट पड़े हों, ग्रिड स्पेसिंग तंग हो. सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल द टाइम because you have to meet the functionality of the structure as well. The structure should be able to serve the function for which it is being constructed, right? So if you are constructing a gathering hall, you cannot design it like a market. You cannot place columns all the time everywhere. So ये चीज़ है, इसको हम functional feasibility कहते हैं और ये आपके डिज़ाइन का मेन हिस्सा होता है. जब आप ये कोड्स यूज़ करेंगे, the codes should be used in keeping in view that the design
function of the design is not disturbed, is not compromised, right? Second thing is economy, because the guidelines, which are the codes, whether it's seismic guidelines or general guidelines of the design, it should be used in such a way that you should design an economical structure, right? The codes are not designed to provide a costly structure. अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो तो आपके डिज़ाइन कोड्स की गाइडलाइंस में आप उसको इस तरह यूज़ करेंगे ताकि आपकी स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी हो, फंक्शनल भी हो. सो ऑल द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाज़ जगहों पे गाइडलाइंस जो है वो या कोड्स जो है आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है. सो यू शुड बी approaching the design in such a way that the codes help you to design the most functional and most economical structure. तो इसके लिए हम मुख्तलिफ proposals बनाते हैं हर एक structure के design के, and then we accept that proposal which gives you the most economical and functional design, right? ये हम discuss करेंगे कि कैसे codes को use करते हुए हम इन दो objectives को achieve करते हैं. Third and fourth objective is basically the strength and maintenance, serviceability इसको हम कहते हैं, right? स्ट्रेंथ के लिए हमें गाइडलाइंस देनी होती है ACI से RCC स्ट्रक्चर्स के लिए और AISC से स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए. एज फार एज द मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, देन इट शुड बी ऑलरेडी कवर्ड इन डिज़ाइन स्टेज में. आपने कवर करना होता है कि आपकी स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेबिलिटी का प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल क्या है? लेट्स से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर कोई क्लासरूम डिज़ाइन कर रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ डीप बीम इन द क्लासरूम, द बीम इज अ ह्यूज ड्रॉप एज पर द कोड्स. तो ये ह्यूज ड्रॉप जो है ये बेसिकली आपकी सर्विसेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फंक्शनल को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके लाइफ टाइम यूज़ को डिस्टर्ब कर रहा है. सो दिस शुड बी कैटर्ड टू डील, दिस शुड बी डेल्ट देयर एट द सेम टाइम इन एज वेल. ये डिज़ाइन का हिस्सा होता है दैट द स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, शुड बी स्ट्रक्चरल स्टेबल, इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड सिमिलरली शुड बी एबल टू फुलफिल इट्स फंक्शन ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, राइट? सो ये सारा डिज़ाइन के हिस्से हैं. नाउ लेट मी शेयर अनदर, पोर्टल पे ऑलरेडी लोड है. लेट मी शेयर अनदर part of the lecture with you. Let me open it. अच्छा, हो ये रहा होता है sometimes what happens is that बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप डिज़ाइन करते हैं यू शुड बी मेक श्योर दैट द स्ट्रक्चर डज नॉट फेल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिज़ाइन का कि स्ट्रक्चर लाइफ टाइम में फेल नहीं होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए आप एक टर्म हम यूज़ करते हैं लिमिट स्टेट. जो लिमिट स्टेट की टर्म है ये इस चीज़ को क्लियरिफाई करती है कि आपकी बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ टाइम में कभी भी फेलियर मोड की तरफ नहीं जाएगी. सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वी आर नाउ, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. व्हाट वी डू इज दैट वी मेक श्योर दैट योर स्ट्रक्चर डज नॉट रीच टू फेलियर स्टेट, इसको हम लिमिट स्टेट कहते हैं. इफ इट रीचेस द लिमिट स्टेट तो इसका लाइफ टाइम जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है. नाउ यू कैन सी हियर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. ओके, व्हेन वी डू द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन फेस में आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को फुलफिल करना होता है, जिसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट. देन यू हैव टू डेवलप द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें प्लानर इन्वॉल्व होता है, इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, राइट? एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं. एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन द इंडिविजुअल सिस्टम्स फॉर द स्ट्रक्चर. नाउ selection criteria, for example, if you are designing a building structure, then you have to make sure that the structure is feasible for all the things it needs to cover, right? For example, the structure should be feasible as far as safety is concerned, it is feasible as far as economy is concerned, it is feasible as far as its lifetime use is concerned, it should be feasible as far as its execution is concerned.
तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपने अभी भी डिस्कस भी किए थे पहले पार्ट ऑफ द कोर्स में, that these lectures included that we have discussed various types of structural systems in RCC that includes the flat plate, flat slab, one-way, two-way joist slab system, simple framing system, something like this, right? So the selection जो है ये बिल्कुल start का हिस्सा होता है. आपका डिज़ाइन का start होता ही इसी से that you have to select the type of structure, whether it should be a flat plate structure, it should be a flat slab, it should be a joist slab system, it should be simple beam frame slab system, जिसमें आपका 1 वे 2 वे स्लैब्स भी आते हैं, राइट. सो ये क्राइटेरिया जो है ये बिल्कुल स्टार्ट में आपने सेलेक्ट करना होता है बिफोर गोइंग फॉर द डिटेल डिज़ाइनिंग. और इसमें आपका दोनों चीज़ें आती है. आपने कास्ट फैक्टर को भी देखना होता है कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो कास्ट इफेक्टिव होगी और आपका डिज़ाइन जो कास्ट इफेक्टिव होगा, राइट. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन selection criteria, you have to make sure one thing, that all the components of the structure that we are designing, these should not reach the limit state. What is limit state? Let us just define it. It is defined as when a structure or its elements like slabs, beams, columns, foundation, these are the elements of structure, right, becomes unfit for its use. It is said to have reached the limit state. मतलब क्या है? अगर आपके डिज़ाइन में आपने एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, स्लैब्स को डिज़ाइन किया है, उसके नीचे बीम्स, फ्रेम्स, कॉलम सारे डिज़ाइन किए हैं, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपका डेड लोड, लाइव लोड, सीजमी लोड, उसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर्स के इन एलिमेंट्स में, इन कंपोनेंट्स में डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गई हैं. स्लैब में बेंडिंग आ गई है, बीम में शेयर क्रैक्स आ गए हैं, कॉलम बकल आउट हो गया है, फाउंडेशन में सेटलमेंट आ गई है, समथिंग लाइक दिस. दीज आर कॉल्ड द लिमिट स्टेट्स, द फेलियर स्टेट्स. इसका मतलब है इसके बाद मज़ीद ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट काम करने के काबिल नहीं है. दीज आर नॉट एबल टू फुलफिल द फंक्शन फॉर विच दीज आर डिजाइंड. तो वी शुड बी डिजाइनिंग सच ए स्ट्रक्चर विच शुड नॉट अलाउ एनी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर टू रीच इट्स लिमिट स्टेट, राइट. ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिज़ाइन का. और RCC डिज़ाइन कोड्स जो हैं, चाहे वो जनरल डिज़ाइन बिल्डिंग कोड्स हैं, सीजमिक कोड्स हैं, मटेरियल स्पेसिफिक कोड्स हैं, दीज ऑलवेज गाइड यू, हेल्प यू इन टू डिज़ाइन सच ए स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स दैट ऑल द लिमिट स्टेट्स आर सिक्योर्ड. The structure components will not reach its limit states. उसमें 3 टाइप्स जो हैं वो कोड्स के अंदर ही लिखी गई हैं लिमिट स्टेट्स की. वन इज कॉल्ड अल्टीमेट लिमिट स्टेट, अदर इज कॉल्ड सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, एंड थर्ड इज कॉल्ड स्पेशल लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट पे आप समझ गए, इट इज़ अ फेलियर स्टेट, द कंडीशन आफ्टर विच दैट एलिमेंट विल फेल. फॉर एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ द स्लैब shows that the slab will fall after the bending, right? The shear cracks in the beam shows that after that the beam will may collapse. The buckling of the column out of its axis show that इट इज़ ए लिमिट स्टेट, जिसके बाद आपका कॉलम क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, फेल हो जाएगा. सो यू शुड नॉट अलाउ एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन टू रीच इट्स लिमिट स्टेट. अब इसमें 3 तरह के लिमिट स्टेट हैं, अल्टीमेट, सर्विसिबिलिटी एंड स्पेशल. अब इसको हम कैसे बचाएंगे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को कि लिमिट स्टेट तक ना पहुँचे, इसको हम कहते हैं RCC डिज़ाइन. और इसके लिए हमें गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी? मटीरियल स्पेसिफिक कोड से, जनरल बिल्डिंग कोड से और सीजमिक कोड से. पहले इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट आर दीज सर्विसिबिलिटी, अल्टीमेट एंड स्पेशल लिमिट स्टेट्स. अल्टीमेट लिमिट स्टेट्स आर दोज स्टेट्स विच एक्चुअली कॉज द कंप्लीट फेलियर. इसको कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए, इस पर चेक रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, when we say that a structure or its element has reached the ultimate limit state, the structure may collapse, right? Such a limit state should have a very low probability of occurrence since it leads to loss and of the structure, right? Loss of the life casualties as well. अब इसमें अल्टीमेट लिमिट स्टेट में कौन कौन से फेलियर मोड्स आते हैं ये देखिए यहाँ पे. लॉस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा, राइट? उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है ओवर स्ट्रक्चर. ओवरऑल जो है उसमें एक ऐसा स्टेट आ गया है कि आपने ये डिक्लेयर कर देना है कि इसमें अल्टीमेट लिमिट स्टेट पहुंच गया है, ये अपने अल्टीमेट स्टेट लिमिट स्टेट को पहुंच गई है. स्ट्रक्चर इसके बाद अपना फंक्शन फॉरफीट नहीं कर सकती. रप्चरिंग, कंक्रीट का फेलियर, स्लैब्स के अंदर, बीम्स के अंदर, कॉलम के अंदर, यार अक्सर अर्थक्वेक के बाद होता है, अर्थक्वेक के टाइम पे होता है. एंड द स्ट्रक्चर शोज सम रप्चरिंग, राइट? डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट्स एवरीवेयर, स्ट्रक्चरल कंक्रीट की डिफॉर्मेशन. देन वी हैव गॉट प्लास्टिक मैकेनिज्म, द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कॉलम्स, बीम, स्लैब्स. ये क्या कहलाते हैं? अल्टीमेट लिमिट स्टेट कहलाते हैं. जिस स्ट्रक्चर में ये अचीव हो, ये नज़र आ जाए, इसके बाद तो स्ट्रक्चर कोलैप्स की तरफ जा रही है, राइट? ओवरऑल इनस्टेबिलिटी, कॉलम का साइज़ बहुत कम है, बीम का ड्रॉप बहुत कम है, स्लैब की थिकनेस बहुत कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनस्टेबिलिटी.
in the structural design, ये भी ultimate limit state में आता है. You should not allow this thing to happen in a structure. And then progressive collapse, fatigue ये टाइम के साथ डेवलप होते हैं. फटीक जो है वो लाइफ टाइम जब पूरी हो जाए किसी स्ट्रक्चर की 50 साल 100 साल समथिंग आती, तो उसके बाद फिर जो है वो उसके अंदर अपनी डिफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती है, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वो भी अल्टीमेट लिमिट स्टेट का हिस्सा है. जो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स हैं, ये वो लिमिट स्टेट है जिसके साथ कोई स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट कर सकती है, वो अपनी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, बट यू शुड हैव अ चेक ऑन दिस लिमिट स्टेट एंड ट्राई टू overcome it by retrofitting and other techniques, right? Because the serviceability limit states are minor in magnitude, and this can cause the disturbance in the functional use of the structure, but it does not lead to collapse. For example, if you are having any deflection in a slab, but that deflection is in a control limit, it is within limit, so it's fine, but you should have a check on that deflection of slab. If you are having some minor crack in a beam, so this minor crack will not lead to failure or collapse, but you should have a check on this crack कि ये ज़्यादा ना हो. If you are having vibration in a structure, for example thickness slab कम है, आप उसके ऊपर चलते हैं, वाइब्रेशन फील होती है. मोस्टली रेजिडेंशियल घरों में लाउंज वाले एरिया में वाइब्रेशन होती है, बिकॉज उसकी थिकनेस काफ़ी नहीं होती, लाउंज के एरिया बहुत बड़ा होता है, स्पेशली बड़े घरों में, राइट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स में भी इस तरह से होता है. So if the vibrations are within limit, it's fine. If these are too much, the vibrations are too much, then you should have a check on that कि ये फिर फेलियर की तरफ जा सकता है. Next thing to discuss is the special limit state, which are not in your control, because these limit state can happen anytime and this can lead to damage or failure. For example, earthquake. So the damage that is done in an extreme earthquake to any structure, it is something which is natural. इसको हम natural scenario भी कहते हैं. So your structure may be able or may not be able to withstand the earthquake forces. Depend करता है कि उसमें earthquake resistance capability कितनी develop की गई है डिज़ाइन में, right? उसी के लिए हम seismic codes को study करते हैं. हमने 3 classes में इसको discuss किया है. And then you've got another type of limit state which can reach in a structure like firework. In a fire, if a structure is under fire, it can lead to collapse. If there is explosion in a structure, then it can lead to collapse. It may or may not lead to collapse. लेकिन ये special limit state में आता है जो normally आप control नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके against structure में resistance capability develop कर सकते हैं. ये भी डिज़ाइन का हिस्सा होता है जिसके लिए specially आपका earthquake seismic design और ये सारे आते हैं, right? Now the loading or the load combinations. Load combinations के लिए हम normally ACI और UBC 97 को यूज़ करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ लोड कम्बिनेशंस यूज़ की जाती हैं, जिसमें लोड मॉडिफिकेशन फैक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए लोड्स को फाइनल करने के लिए, राइट. ये आपका नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन होगी, देयर विल बी अ लाइव सेशन एंड विल बी डिज़ाइनिंग दी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कोर्स. तो उसमें आप ये खुद ही देखेंगे कि लोड कम्बिनेशंस कैसे यूज़ होती हैं, और BCP-SP07 में डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, SDL के लिए कौन कौन सी लोड कम्बिनेशंस हैं जो कि ACI से हटके हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ. इफ यू सी दिस स्क्रीन, देयर इज़ अ क्रॉस कंपैरिजन बिटवीन लोड कम्बिनेशंस ऑफ ACI एंड दी UBC और यू कैन से BCP-SP07. जिसमें आप देखें आपका ये जो सेकंड कम्बिनेशन है जो मोस्ट इफेक्टिवली यूज होता है स्टैटिक लोड डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें डेड लोड और लाइव लोड होता है. सो द लोडिंग increase or the load increasing factor for dead load is kept as 1.2 in ACI 13002 in this version, while in the UBC 97 or in BCP SP07 this version is not 1.2. This load increase is 1.4. It is preferred to be 40% increase. So there is a preference of 40% increase in the dead load when we use the design और when we design the slab of a structure. तो ये आप नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसका यूज़ हम कैसे करते हैं. आपने RCDII में थोड़ा बहुत यूज़ किया भी होगा, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच कोड वी आर यूजिंग, राइट. In the live load category, the increase in load is recommended to be 60% for structures in ACI, while in case of UBC 97 and BCP-SP07, the increase in the live load is kept to be 70%. You can see it is 1.7. इस तरह से अर्थक्वेक के लिए, विंड फोर्सेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए डिफरेंस है, और लोड इंक्रीजिंग फैक्टर्स जो है वो चेंज है ACI के और UBC 97 के. सो मोस्ट प्रॉबली द UBC 97 इट इज़ द ओल्डर वर्जन ऑफ द जनरल बिल्डिंग डिज़ाइन. ये ज़्यादा सेफ है बिकॉज इसमें
स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इकॉनमी थोड़ी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पाकिस्तान के लिए सूट करता है। लिहाजा पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स के वो चैप्टर जो कि जनरल बिल्डिंग कोड्स को कवर करते हैं, उसमें यूबीसी के लोड कम्बिनेशंस को और रिडक्शन कोफिशिएंट्स को यूज़ किया गया है, राइट। इसमें देखिए रिडक्शन कोफिशिएंट भी आपको नज़र आ जाएंगे, ये वाले हैं। So in UBC 97 and in ACI 318 or whatever, the reduction factor for strength, the strength reduction factor for tension member is 0.9 both में same है। shear and torsion में जो है ये 0.75 0.85 है। So there is variation in the reduction factors in the ACI and UBC as well, and we'll be dealing with this जब हम इसको proper डिज़ाइन करेंगे। So उस टाइम आपको इसको आइडिया हो जाएगा कि लोड इंक्रीजिंग फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं और रिडक्शन फैक्टर्स जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के डिज़ाइन में क्या रोल प्ले करते हैं। ये सारे आपके जनरल डिज़ाइन बिल्डिंग कोड्स हैं और मटेरियल स्पेसिफिक कोड्स हैं जो कि सीस्मिक कोड्स के साथ मिल के यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर एज अ होल। सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइक स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स, फाउंडेशन, स्टेयर्स, RCC वॉल्स एंड वी हैव गॉट अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एज वेल, वो सारे के सारे इन कोड्स के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं RCC में, राइट। व्हेन यूज वर्ड RCC इसका मतलब है आपका रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन। स्टील स्ट्रक्चर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो AISC है जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो एक्चुअली इट वाज अ जनरल